Hello guys, this is Devanshi Jaswal and welcome back to our channel. Again, I'm back with another property video for you guys, and this time it's a commercial property and I am in Noida sector 150 to show you a commercial property by Bhutani Infra, and the property name is Bhutani City Center. Well guys, without wasting any more time, let's talk about the locality first. So this particular property is in Noida sector 150. अगर मैं सबसे पहले बात करूँ कि मेट्रो स्टेशन से हम कैसे पहुँच सकते हैं, तो जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है फ्रॉम हियर इज़ नोएडा सेक्टर 148 एंड उसके बिल्कुल ऑपोजिट में प्रॉपर्टी है. आप within 2 kilometers जो है वो मेट्रो स्टेशन आपको मिल जाता है. Other than that, right in front of this property we have Shaheed Bhagat Singh Park. This huge park is the biggest landmark of Noida sector 150 and ये 40 एकड़ का पार्क है और obviously यहाँ इसके जस्ट सामने प्रॉपर्टी है, तो it's a very great thing. Other than that, if I talk about the locality, the people who are living around, तो ये एक बहुत ही high end society है. यहाँ पे जितने भी projects हैं वो around 1 crore plus के हैं. Well, other than that, the sector is sector 150, which is the biggest and the most prime sector because जेवर एयरपोर्ट जो है उसके बाद जो पहला सेक्टर पड़ता है दैट इज सेक्टर 150 और यहाँ से कनेक्टिविटी जो है फिर बहुत ही अच्छी होने वाली है हमें. अगर मैं बात करूँ परी चौक की तो दैट इज़ जस्ट 2 किलोमीटर्स अवे, और अगर मैं अक्षरधाम की बात करूँ तो वो भी हाफ एन आवर जो है उसके डिस्टेंस में आपको मिल जाता है. So well, yeah, this was the whole about the locality, and now without wasting any more time, let's just get into the video. We have 4 towers in Bhutani City Center 150, Tower A, Tower B, Tower C and Tower D, in which Tower A and Tower B have single basement parking and Tower C and Tower D has double basement parking. Now let's talk about the shop spaces. In the ground floor we have lockable shop spaces and the starting size of that will be 300 square feet. And if I talk about the price, the per square feet price of that will be 30,000. The shops over here have around 17 feet of height, that is almost double heighted, which would make it more luxurious and gorgeous. Now let's talk about the shops on second and third floor. The starting size of that will be 250 square feet, and if I talk about the price, that will be around 27,000 rupees. On the second and third floor, we have resto bars and clubs. And if I talk about that, the investment option in that is of 134 square feet. You will get 67 square feet of space in the terrace and 67 square feet of the space on the third floor. If I talk about the payment option of that, that will be 29,90,000. The front open plaza is 26,000 square feet. And we have car parking spaces for around 400 plus cars. The gap between the towers is 32 feet. Other than that, the front road of this project is 30 meter wide, which again makes it more accessible for the people. Well, another thing that Bhutani is launching in this project is a large sports area. And over here आपको सभी चीज़ें मिलेंगी related to sports, whether it's outfit, whether it's shoes or whether it's equipments, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी. And if I talk about the payment and the like investment option, तो यहाँ पे minimum जो area है that will be of 100 square feet और ये आपको open area मिलेगा. And minimum आप जो यानी investment कर सकते हैं वो around 25 lakhs कर सकते हैं, क्योंकि per square feet का जो rate है that is around 25,000 और यहाँ पे आपको रिटर्न मिल रहा है अराउंड 25,000 का, which is a great deal guys. So yeah, other than 4 towers at the backside of this project, we have huge spaces. On the first floor we have Baker's Alley and the second floor is completely dedicated to wellness. And on the third and fourth floor it will be for gaming zone. Well guys, here we have company official Mr. Rajiv with us. Hello sir. Thank you. Sir, can you please tell us about the payment plan of Bhutani Sector 150? देखिए, पेमेंट प्लान की बात करें तो हमारे पास इस वक्त 25 का पेमेंट प्लान है, जिसमें कि कस्टमर को 30 डेज के अंदर कंप्लीट करनी होती है पेमेंट 50% की,
और 25% जब हम सुपर स्ट्रक्चरल, इसके अप्रॉक्सीमेटली 6 to 8 मंथ्स का टाइम फ्रेम है, एंड देन बैलेंस पेमेंट जो है 25% की वो जाएगी पोजीशन पे, जो कि 1.5 साल का टाइम है उसके लिए। तो मतलब पोजीशन जो है वो हमें 2023 दिसंबर 23 हमारा टाइमलाइन है पोजीशन के लिए। तो उसके बाद हमारा तकरीबन 3 से 4 महीने का फिट आउट पीरियड रहता है, तो उसके बाद द कॉम्प्लेक्स विल बी रन। ओके सर, एंड उसके अलावा अगर आपको कुछ और पॉइंट्स बताने हैं कि इस प्रोजेक्ट में क्या ऐसे हाइलाइट्स हैं जो आप मेंशन करना चाहोगे तो वो देखिए, हमारा प्रोजेक्ट जो है इस वक्त आज की डेट में जो ओनली हाई स्ट्रीट रिटेल प्रोजेक्ट है जो कि ऑपरेशनल है आज की डेट में। और सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि हमारा जो फ्रंटेज है वो बहुत ही बड़ा है, दैट इज 500 फीट से ज़्यादा का फ्रंट आता है, एंड दैट ओवरलुक्स शहीद भगत सिंह पार्क, जो कि अथॉरिटी का पार्क है, आज की डेट में ऑपरेशनल है और 40 एकड़ के से ज़्यादा साइज का है। तो हमारे पास काफ़ी लोकेशन एडवांटेज है यहाँ पे, एंड वी आर सराउंडेड बाय द रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स। और इसके बीच में जो हम कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं, हम इसमें जोनिंग प्लान किया है, वो भी बहुत यूनिक है। हम यहाँ पे हाइपर मार्ट भी लेके आ रहे हैं, हम यहाँ पे बेकर जोन भी लेके आ रहे हैं, हम यहाँ पे स्पोर्ट्स जोन भी लेके आ रहे हैं, बोर्ड गेमिंग जोन हम लेके आ रहे हैं यहाँ पे। उसके अलावा हमने यहाँ पे वेलनेस जोन भी क्रिएट किया है, और हमारा एक जो टॉप फ्लोर पे है वो भी यूनिक कॉन्सेप्ट है, दैट इज सेंट्रल डाइन, जिसमें कि हम रेस्टोरेंट बार्स लेके आ रहे हैं। और आसपास की सराउंडिंग में ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट नहीं जो इन सारे थीम बेस्ड चीज़ों के साथ आ रहा है। ओके, so basically this commercial property has a lot to offer. Yes, it's going to be high-end commercial property in the days to come, because ये सेक्टर अपने आप में यूनिक है। It's a lowest density sector है। We are very close to the Yamuna Expressway, and we are surrounded by many operational जो हमारे highways हैं उनसे connected हैं। काफी जितने भी प्रोमिनेंट ब्रांड्स हैं रियल एस्टेट के, दे ऑल हैव हैविंग प्रेजेंस ओनली इन दिस सेक्टर। आप बात करेंगे टाटा की, गोदरेज की, पैक्स ग्रुप की, प्रेस्टीज ग्रुप की, वो सिर्फ इसी सेक्टर में मिलेंगे आपको और कहीं नहीं मिलेंगे यमुना एक्सप्रेसवे में। सेक्टर का अपना गोल्फ रेंज है, दैट इज 9 होल। द क्रिकेट अकेडमी इज ऑलरेडी ऑपरेशनल आज की डेट में है। उसके अलावा यहाँ पे एक फुटबॉल अकेडमी भी आ रही है, स्विमिंग अकेडमी ऑपरेशनल है, एंड many more things to come in this sector. So basically this project is already successful, we are sure about that. Yes, we have already we have हमारे पास इन्वेंटरीज भी बहुत लिमिटेड बची हैं आज की डेट के अंदर, तो हम we'll promise whatever we have promised we'll deliver on it. Well guys, you have heard it yourself, inventories बहुत कम बाकी हैं, so if you want to invest in this property जल्दी से करो। Thank you so much sir, thank you. Well guys, here we are at the construction site to show you the exact progress of this project. And over there you can see we have tower A and tower B, जिसकी ground level की construction जो है वो complete होने के बाद now it's on first floor, and over here we have tower C and tower D जो कि अभी basement level पे चल रहा है। And if I talk about the possession of this property, that is around December 23, और as you can see काम बहुत अच्छे से चल रहा है, तो for sure हमें possession जो है वो time पे मिल जाएगा। Well yeah guys, this was all about the commercial property Bhutani City Center 150. I hope I was able to explain you everything perfectly. If not, you can ask us in the comment section below, and you can even contact us through phone number given, or you can contact us on WhatsApp as well. And do visit this property yourself, because construction जो है वो बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है, investment plans जो है वो बहुत ही amazing है, and the locality is amazing as well. Sector 150 जो है वो बहुत ही growing area है और one of the most prime and biggest sector है of Noida. So if you are looking to invest somewhere, I guess this is the property for you guys. तो जल्दी से हमें contact करिए. And yeah, this was the whole video. Thank you for watching it. Do like it, comment on it and share it. And also subscribe to our channel. Thank you.